not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. संस्कृति ये होती है कि वो भी जूते उतारे और आप भी. संस्कृति ये नहीं होती कि वो जूते उतारे आप नहीं. My great grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. A centralizing vision, the vision of a king. The idea of a king, which the Congress removed in 1947. We smashed that idea of a king. Now that idea of a king has come back. That there is a king. It did not behoove this house. It was not at the standard that this house should be used to. It is not at the standard that India should watch. Now, ये चुप बैठा रहेगा. ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा. ये चुप नहीं बैठा रहेगा. इस हिंदुस्तान को सब कुछ दिख रहा है. पूछा 60 साल की बात आपने कही. यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में. हमारा आंकड़ा नहीं है. हमारा आंकड़ा नहीं है. हमारा आंकड़ा नहीं है. दोस्तों नमस्कार, मैं नमस्कार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। आज राहुल गांधी का संसद में भाषण था और भाषण में उन्होंने आज नकाब खींच लिए और जगह दिखा दी। लेकिन एक तरफ जब संसद चलनी शुरू हुई और जब ये सवालों जवाब का सिलसिला चलना शुरू हुआ दोस्तों, तो लग रहा था कि संसद को उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। यहां पर योगी और मोदी की तारीफ के अलावा और झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं था। लग रहा था कि संसद नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कोई जनसभा से भारतीय जनता पार्टी के नेता संबोधित कर रहे हैं, चुनाव जिताने की अपरोक्ष रूप से अपील कर रहे हैं। वो गिना रहे हैं फायदे उज्ज्वला के, जबकि गैस नहीं है। वो गिना रहे हैं फायदे कोरोना के, जबकि वैक्सीन सबको लगी नहीं है। वो गिना रहे हैं फायदे कि साहब प्रवासी भारतीय जो थे, चले थे कोरोना के टाइम पर, तो हमने उनको इतना सब कुछ दे दिया। लेकिन सब कुछ झूठ और झूठ और झूठ बोलते चले गए भारतीय जनता पार्टी के सांसद। लेकिन इस बीच एंट्री होती है हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। जी हां, राहुल गांधी की एंट्री होते ही जैसे सब पसीना पसीना हो जाते हैं। बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस के लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, किसी ने कोई टोका टाकी नहीं की। लेकिन राहुल गांधी ने जब भाषण देना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी की चड्डियां भी उतारनी शुरू कर दी और सीरियस जो कंसर्न है देश के, उनकी तरफ ध्यान खींचा। तो ये वीडियो राहुल गांधी का भाषण मैं आपको दिखा रहा हूं। अनकट डालूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। महत्वपूर्ण हिस्से यहां डाल रहा हूं, किस तरह से राहुल गांधी को रोका गया, राहुल गांधी ने किस तरह से धज्जियां उड़ाई मोदी सरकार की, और मोदी सरकार के इन बहरूपियों की जो बहरूपी आज योगी और मोदी के बारे में बस प्रचार कर रहे थे, क्योंकि इनको बोला गया था योगी के द्वारा कि बस आपको यही करना है। तो देखिए राहुल गांधी की स्पीच, अगर इसमें पूरा देखेंगे स्पीच और उसके बाद कमेंट करेंगे तब मजा आएगा। The presidential address didn't touch a couple of central challenges facing our country. There are now two Indias. There is now no longer one India. There are two Indias. One India is for the extremely rich people, for those who have immense wealth, for those who have कोई भी नहीं खड़ा हुआ यहाँ। इस गरिमा को मद्देनजर ये चर्चा करना चाहिए
नेता सत्ता पक्ष भी है, नेता विपक्ष भी है। हमारे नेता भी बोल रहे हैं, समय हमें दिया गया, इस सूची में हम बोल रहे हैं। अगर आप ये चाहें कि हमारे नेता को बोलने में बाधा डाले जाए तो मौका हमारे भी आएंगे। आपको नेता जब यहाँ बोलने उठेंगे हम भी इस तरह की बाधा डालेंगे। ये आपको समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा नहीं, हम लोग डरे हुए नहीं है, हम अपना बात रखना चाहते हैं, अधिकार है हमारा। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। आपने अभी देखा होगा, अभी दो स्पीकर्स ने बात की, मगर आपने ये नहीं कहा कि रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पे युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने नहीं बोला। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था। और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। आपको मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। इस पिछले साल 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। आप बात करते हो रोजगार देने की, 2021 में 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमें, हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और जो था वो गायब हो गया। और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को आप ही पहचानते हो, क्योंकि आपने भी अपने भाषणों में रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा। कितना रोजगार पैदा किया गया है, किस प्रकार किया गया है, उसके बारे में आपने नहीं बोला। और आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख के कहेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। तो ये स्थिति पैदा कैसे हुई? ये दो हिंदुस्तान पैदा कैसे हुए? रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उधर बनता है। लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया। आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है। सात की कर रहा हूं मैं, 60 की भी करूंगा मैं अपने भाषण में अंत में 60 साल की बात करूंगा आपको खुश करने के लिए। आप ठहर जाइए। मगर असंगठित जो सेक्टर है उस पर आपने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोरोना के समय जो सपोर्ट उनको देना था आपने नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आज 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है और वो तेजी से
गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। यूपीए की सरकार ने, आपने पूछा 60 साल की बात आपने कही, यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है। आपने बात उठाई तो मैं उसके बारे में पहले बोल देता हूं। एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। और दूसरी साइड अंबानी जी पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोलियां। तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और आपने जो असंगठित सेक्टर को खत्म किया, देखिए अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म कर देते और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आप क्रिएट कर देते तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, फिर दो हिंदुस्तान नहीं बनते। मगर आपने क्या किया? आपने असंगठित सेक्टर को खत्म कर दिया। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, सारे के सारे जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस उनको आपने बंद कर दिया। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। सारे के सारे जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है आपने उसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अगर आप उनकी मदद करते, और अगर आप उनकी मदद करते, उनको सपोर्ट देते, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तैयार हो सकता था। मगर जो लोग आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना सकते थे उनको आपने खत्म कर दिया। तो आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन है? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। अरे भाई, मेड इन इंडिया करने के लिए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को ही बड़ा करना पड़ेगा। बिना स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को सपोर्ट दिए मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। और अगर आप पूछते हैं तो मैं आपको बताता हूं, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की अगर हम बात करें तो मेरे पास आंकड़ा है यहां पे। पिछले 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स 46% कम हुए हैं। 46% drop in manufacturing jobs in India. Why? Because you have destroyed the unorganized sector. Why? Because you have destroyed MSMEs. That is why you are focusing completely on 5 or 10 people. I don't have a problem with that. नया हिंदुस्तान, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, और कौन से नारे हैं? स्टार्टअप इंडिया। आप ये बोलते रहते हो और देश में बेरोजगारी फैलती जा रही है। और आप ये मत सोचिए कि ये जो गरीब हिंदुस्तान है जिसको आप बना रहे हैं, ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा। ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा। ये चुप नहीं बैठा रहेगा। इस हिंदुस्तान को सब कुछ दिख रहा है। इस हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज, सुनिए, इन लोगों को दिख रहा है कि आज, ये आंकड़ा आप सुनिए, ये आपकी सरकार की देन है, ये आंकड़ा अच्छी तरह सुनिए। इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। बात समझिए। 10 लोगों के पास
40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है 10 लोगों के पास। ये कैसे हुआ? ये आपने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। और तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं, प्रधानमंत्री जी को आपको सुझाव देता हूं, ये जो दो आप हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, इन दो हिंदुस्तानों को जोड़ने का काम जल्दी से शुरू कीजिए। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की मदद करना शुरू कीजिए। जो हमारे बेरोजगार युवाएं हैं उनकी मदद कीजिए। और ये जो आप पूरा का पूरा धन इन्हीं 5-10 लोगों को दे रहे हो, क्योंकि ये आपकी मार्केटिंग करते हैं, आपको टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक पे लगाते हैं, ये काम आप बंद कीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा। आपका नहीं, देश का नुकसान। Azad has to have the same right as my brother from Maharashtra, as my sister from Maharashtra, as my brother from Uttar Pradesh, as my brother from Bihar, as my sister from Manipur, Nagaland, Mizoram. That's what it means. What it means, Jammu Kashmir, of course, Jammu Kashmir, Nagaland, of course, Andaman Nicobar, of course. That is Lakshadweep. Now, what is the difference? You have to understand this. This is a serious matter. I would like to have your view on it. And I would like this Parliament House to start serious discussions instead of the type of discussions that we're having. That is why it is serious. It is serious. And I would like a serious response. Right? What I heard, frankly, what I heard in the first address today was not serious. What I heard Mr. Dwivedi say was not serious. It did not behoove this House. It was not at the standard that this House should be used to. It is not at the standard that India should watch. Now, it has never been done in 3,000 years. Never, ever. The only way India has been ruled. And you can look at any empire you want. You can look at Ashoka the Great. You can look at the Mauryas, you can look at the Guptas, you can look at anyone you want. It has always been ruled by conversation and negotiation. Now, what is the problem? The problem is you people are confused. The problem is you people think that these languages, these cultures, these histories, you think that you can suppress them. You have no idea of history. You have no idea what you are dealing with. बोल देता हूँ, मैं उस पे भी बोल देता हूँ, मैं इमरजेंसी में भी बोल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोलने से नहीं डरता हूँ. A centralizing vision, the vision of a king. The idea of a king, which the Congress removed in 1947. We smashed that idea of a king. Now that idea of a king has come back. That there is a king, a Shahin Shah, a ruler of rulers, a master of masters. Now what is happening? The idea of Tamil Nadu is excluded from Indian institutions. They can keep coming to you again and again and again and again and saying, need. And you will say, no, get out of here. Right? They do not have a voice in your framework. The farmers of Punjab can stand up and say, we do not agree with these 3 laws. They do not have a voice in your framework. Only the king has the voice. The farmers can sit for 1 year. They can sit for 1 year outside in Corona. They can die. Doesn't matter. The king does not agree. When you apply Pegasus on an Indian politician, when the Prime Minister personally goes to Israel and authorizes the use of Pegasus in India, he is attacking the people of Tamil Nadu. He's attacking the people of Assam. He's attacking the people of Kerala. He's attacking the people of Bengal. Point of order. 52-1.
352(1 स्पीकर सर 352(1 कहता है कि ए मेंबर वाइल स्पीकिंग shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग है सर. And you are fiddling. I understand this. You might not appreciate it, but my great-grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. My blood has been sacrificed, not by me, by my great-grandfather, by my grandmother, by my father for this country. So I understand what it is. And you are fiddling with something very, very dangerous. And I am advising you, stop. Because if you do not stop, you will create a problem. You have already started creating the problem. The problem has already started in the northeast. The problem has already started in Tamil Nadu. You're not visible. It's not visible to you right now. Jammu Kashmir, which I will speak about. Everybody. You are disrespecting everybody. Disrespect me, I don't care. It doesn't matter to me. But you cannot disrespect the people of this country. Right? Now, final. And I think one of the more important parts of my speech. Actually, I want to say one other thing, which I demand an apology from the Home Minister. And this represents again the idea of a union of states versus the idea of a king. Now, a few days ago, some political leader, I'm not going to name, came to me from Manipur. And he was very agitated. I spoke to him. I said, why are you agitated, my brother? And he says, Rahul ji, I have never felt as insulted as I have a few days ago. I said, why? He said, Rahul ji, a delegation of Manipuris, political leaders, senior leaders went to see the Home Minister. Outside his house, we were told to take off our shoes. And when we went inside his room, we found that the Home Minister was wearing his chappals. What does this mean? What exactly does this mean? Why is it that in the Home Minister's house, the Home Minister can wear chappals, but a delegation of Manipuri politicians cannot? What does this mean? Why? No, it reflects. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं. मैं आपको फोटो दिखा दूंगा स्पीकर सर, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा. मैंने उस व्यक्ति से बोला आप गलत बोल रहे हो. उसने कहा राहुल जी मैं आपको फोटो देता हूं, और फोटो दी उसने मुझे. This is not the way to deal with the people of India. Anyway, now let me come to my final and I think most important point. Go ahead. We are sitting. संस्कृति ये होती है कि वो भी जूते उतारे और आप भी. संस्कृति ये नहीं होती कि वो जूते उतारे आप नहीं. That I am bigger than you. You are nobody. I am everybody. That is why I will wear my shoes and you will not. What is happening is that India today is completely isolated. We are completely isolated and surrounded. We are surrounded in Sri Lanka, Nepal, Burma, Pakistan, Afghanistan, China, everywhere we are surrounded. And our opponents understand our position. Please let me speak, because I'm saying something very serious, right? I'm saying something very serious. Let me say, we have been weakened. The conversation between our people is not taking place. Our institutions are under attack.
and we are completely surrounded. The Chinese have a very clear vision of what they want to do. They are very, very clear about what they want to do. And 1 second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. Without any doubt that the Chinese, please, we are all nationalists, so let us discuss properly. I can see that China has a clear-cut plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. Do not underestimate what we are facing. This is a very, very serious threat to the Indian nation. This is a very, very serious threat to the Indian nation. We have made huge strategic mistakes in Jammu and Kashmir. We have made huge strategic mistakes in our foreign policy. And if we do not correct those mistakes, what are the mistakes? I have just told you. You have brought China and Pakistan together. You have brought China and Pakistan together. You have taken the concept of two different fronts and converted it into one unified front. And by the way, in case you haven't realized it, in case you haven't understood what's going on, it is very clear that the Chinese and the Pakistanis are planning. Look at the weapons that they are buying. Look at their activity. Look at the way they are talking. Look at who they are speaking to. I am clearly stating in the House of Parliament that we have made a massive blunder, and we need to make sure, absolutely sure, that we can defend ourselves against the Chinese. Please remember what I'm saying, because the Chinese will act. Remember what I'm saying. The nation is at risk. The nation is at risk from outside. The nation is at risk from inside. And that is a very dangerous place for a nation to be. And I don't like it. I'm very uncomfortable with my nation, with my beloved country standing where it is standing. Completely isolated on the outside, fighting on the inside, institutions captured, states not able to speak to each other. This worries me. It frightens me for my country. And so that is why I thought it was important that I speak today. I know that many of you will just rubbish what I'm saying. I understand it. That's what you've been told to do. And I'm happy to let you do it. But remember what I said. You are putting this nation. क्योंकि ये सबसे सेंसेशनल, सबसे पहला वीडियो होगा जो राहुल गांधी की स्पीच को अपने एनालिसिस के साथ पेश कर रहा होगा यूट्यूब चैनल। तो आज़ाद हिंद आवाज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग मुझसे नाराज़ लगते हैं या यूट्यूब ने रीच डाउन कर दी है, पता नहीं क्या बात हो जाती है। लेकिन चलिए, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं तो राहुल गांधी का साथ तो देना बनता है ना दोस्तों। तो सुनिए राहुल गांधी की ये स्पीच, जिसने भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर एक जोरदार
तमाचा जड़ दिया है उसकी नकली नीतियों के ऊपर। राहुल गांधी ने किस तरह से बेइज्जत किया है मोदी सरकार को, विदेश नीति पर, हर नीति पर कैसे घेरा है। एक सीरियस भाषण राहुल गांधी का, एक संवेदनशील भाषण राहुल गांधी का, जिसमें राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। यह भाषण आपने सुन लिया होगा दोस्तों, अब उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया तो दे दीजिए कम से कम कि राहुल गांधी को नंबर कितने देते हैं आप इस भाषण के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।